Hey guys, welcome to this channel. Today I will be making stencil photo frame. So without wasting any time, let's get started. So the first thing we need is this MDF board. So here I am applying gesso, and if you don't have gesso, that's totally fine. Also, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe this channel. Once that is all done, हम थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे. और अब मैं ये bluish green कलर लूँगी and I am quickly going to paint this. पेंट करने के लिए here I am using ब्रश के बाद मैं स्ट्रोक्स रिमूव करने के लिए हमेशा की तरह स्पॉन्ज का यूज़ करूँगी. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग स्क्रिप्ट स्टेंसिल. स्टेंसिलिंग के लिए आई एम मिक्सिंग मोर ऑफ वाइट कलर टू गेट द लाइटर वर्जन ऑफ दिस कलर. And this is what it will look. After stenciling we need these things: jute rope and silicone glue. With the help of silicone glue मैं jute rope को इस तरह से stick करूँगी. You can also use normal glue. आफ्टर दैट मैं कुछ फ्लावर्स भी इसमें ऐड करूँगी. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस स्मॉल वुडन क्लिप फोटो को हैंग करने के लिए. मैंने फोटो कुछ इस तरह से हैंग कर दिया है. अब मैं जूट रोप के हेल्प से इस तरह से जूट का बो बनाऊंगी टू ऐड सम एम्बेलिशमेंट्स. You can add whatever photo you want. It's totally up to you. After that, I am using these prime chipboards. Beautiful and amazing, to give it a final touch. At last I am using frame hook hanger to hang this photo frame. With the help of any strong glue आप उसे पीछे में स्टिक कर दें. And this is what it will look like. You can add your family photo with your friends. Also you can gift it to anyone. And that's it for today's video, guys. And if you like this video, please give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe, share and like. Thanks for watching, guys. Bye bye.